Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In today's session, we are going to discuss partnership business. And these are the four basic things that we are going to discuss in this chapter. That is the basic characteristics of the partnership business and the basic accounting. That is how to divide the profit and loss of a partnership business among the partners or the owners, agents of the business. Next, we will see the cases of dissolution of partnership business, that is the admission of a partner, withdrawal of a partner, or the death of a partner. We will see how the accounting of these three cases. And in last of this chapter, we will study the liquidation of partnership business, and we will look into the matter. We have two different cases in liquidation. That is when all the partners have enough cash to pay off the debts, that is there is no capital deficiency in the business, and the second case where there is a capital deficiency. In today's session, we are just going to focus on the partnership business, that what actually the partnership business is, and we will see the basic characteristics of the partnership business, and then we will see how a partnership business actually started, what are the basic entries, the entries that are different from the service business. We will study them, and in the last we will study the division of income or loss among the partners. So let's see what is a partnership business. Over here, you can see a proper definition of partnership business. Actually, partnership business is an unincorporated association. It means in the eyes of law, it is not, it is basically a separate entity, but it is not considered as a legal entity, right? So it is an unincorporated association. Now, about the members of the partners, two or more than two people can join together and can start a partnership business. It could be a profit-seeking institute, and they work as owners or agents in that particular business, right? In a banking, in particularly in the banking sector, the number of partners um, range from 2 to 10, while in rest of the businesses other than banking sector, the total number of partners could exceed to 20. So 2 to 20, minimum 2 and maximum 20 in rest of the businesses except banking, right? Now let's see what are the basic characteristics of the partnership business. First of all, this is a voluntary association. It means कि पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए आप कोई जोर जबरदस्ती की तो बात है नहीं, दोनों दो पार्टनर्स हैं या दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं, वो मिलकर अपनी कॉन्सेंट के साथ उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. सो इट्स अ वॉलंटरली एसोसिएशन बिटवीन द पार्टनर्स और अमंग द पार्टनर्स. Partnership agreement, whenever two or more than two people, they decided, let's say today they have decided to start a partnership business, their actually partnership has actually formulated, but still हम स्टिल ये कहते हैं कि इफ यू ब्रिंग ऑल द थिंग्स इन राइटिंग, जो भी आपके एग्रीमेंट्स हैं, जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी आप लोगों की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है बाय ऑल द पार्टनर्स, जो कुछ भी आपके दरमियान एग्रीड हुआ है, उसको अगर आप इन राइटिंग ले आए तो इट वुड एक्चुअली हेल्प यू टू स्टॉप फ्रॉम, मतलब फ्यूचर में आपके जो आपके आर्गुमेंट्स हैं या फ्यूचर में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस हैं उनको रिड्यूस कर देता है. सो इट्स गुड इफ यू शुड ब्रिंग ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशंस इन राइटिंग. अदरवाइज if the all the things that have decided among you is in oral agreement or is a verbal, if verbally expressed कर दी गई हैं तो भी it's okay. Contract is considered to be binding, right? Now अगर आप इसको writing में ले आते हैं to avoid the future disputes, तो इसको हम पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और बेसिकली से क्या कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ को पार्टनरशिप, राइट? और बेसिकली ये जो हम राइटिंग में लेकर आते हैं, इसमें कौन सी बेसिक चीजें हैं जो हम वो राइट डाउन कर रहे होते हैं, द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. बिकॉज जरूरी नहीं है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में तमाम पार्टनर्स इक्वल अमाउंट ही कंट्रीब्यूट करें. फॉर एग्जांपल, अगर 3 लोग एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करें, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, 1 लाख का आपका बिजनेस है, तो हो सकता है कि 2 पार्टनर्स 40-40 कंट्रीब्यूट करें
और एक पार्टनर आपका 20,000 कंट्रीब्यूट कर रहा हो, तो it's possible that the level of contribution, the amount invested in the business by all the partners must not be the same. So you have to write it down that what is the contribution of each partner, what are their total names and their address and their email address and their bank account numbers and the details. The rights and duties, it means अगर आप पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं कि किसकी क्या ड्यूटी है, कौन बाइंग ऑफिसर होगा, कौन फाइनेंस को देखेगा, which one is the person who is responsible for marketing or something like this, तो अगर आप राइट्स और ड्यूटीज पहले से ही असाइन कर देते हैं तो भी फ्यूचर में डिस्प्यूट्स कम होने के चांसेस हैं। राइट्स में यहाँ पर एक्चुअली डिफरेंट राइट्स होते हैं पार्टनर्स के पास, तो वो डिफरेंट जो भी राइट्स हैं वो भी आपको वहाँ पे स्टेट करने पड़ते हैं, मेंशन करने पड़ते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअली जो भी पार्टनर्स के दरमियान प्रॉफिट लॉस शेयरिंग की रेशियो होगी 60-40 आपकी है, 70-30 है, 3:2:1 है, जो भी आपकी प्रॉफिट लॉस या इक्वली आपने प्रॉफिट लॉस शेयर करना है, वो जो भी सिचुएशन है वो आपने राइट डाउन करनी है वहां पर कि किस बेसिस पर प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक हो गया। देन वी हैव विड्रॉल अरेंजमेंट, जैसे मैंने अभी आपसे कहा राइट्स होते हैं डिफरेंट जो कि राइट डाउन करने पड़ते हैं, उनमें से एक राइट विड्रॉल का राइट है कि क्या पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप बिजनेस से अपनी पर्सनल यूज के लिए कुछ चीजें विड्रॉ कर सकते हैं। डू दे हैव द राइट टू विड्रॉ cash or any particular asset from the business for their own personal use? So if you will mention that yes, all the partners have rights, okay, लिख दें। अगर आपको लगता है कि जनाब विड्रॉल्स अलाउड है लेकिन विड्रॉल्स के ऊपर आप एक लिमिट इम्पोज करना चाहते हैं कि आप 10,000 से ज्यादा कोई नहीं निकालेगा, तो ठीक है, आप विड्रॉल्स की वो जो लिमिट्स हैं उनको भी मेंशन कर सकते हैं, या सिंपली किसी को भी विड्रॉल्स अलाउड नहीं है, जो भी आपके सिचुएशंस हैं वो आप राइट डाउन करेंगे। डिस्प्यूट्स प्रोसीजर्स पे एक्चुअली मैंने आपसे कहा ना, एसोसिएशन होती है, वॉलंटरी एसोसिएशन, तो इसमें डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहां पर आप अपने आर्बिट्रेटर का नाम भी लिख सकते हैं कि जनाब इन केस इफ अगर हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो फलाने पर्सन को हम एज एन आर्बिट्रेटर रखेंगे, हु विल लिसन टू ऑल ऑफ अस एंड देन ही विल सजेस्ट अ सोल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। या आप डिस्प्यूट प्रोसीजर्स को वो भी, इसके अलावा भी अगर आप कोई मेंशन करना चाहें कि हम इस तरीके से अपने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करेंगे तो वो भी आप क्लियरली स्टेट कर सकते हैं। सिमिलरली द रूल्स ऑफ एडमिशंस एंड विड्रॉल्स, अगर हम 3 लोगों की पार्टनरशिप है A, B, C, और अगर मिस्टर डी आपके बिजनेस में एंटर होना चाह रहे हैं तो एडमिशन के रूल्स क्या, प्रोसीजर्स क्या होंगे, और अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर आपके बिजनेस को क्विट करके जाना चाह रहा है, विड्रॉल का केस है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी का बिजनेस है और मिस्टर सी वांट्स टू लेफ्ट द बिजनेस, तो व्हाट वर द रूल्स, विड्रॉल्स की क्या कंडीशंस होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। सो द रूल्स ऑफ एडमिशंस एंड विड्रॉल्स, rights and duties in the event of a partner dies, it means ये इट्स a natural thing that आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी टाइम पे भी कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम बाकी जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स हैं उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी। तो इसके अलावा भी आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स लिखवा सकते हैं, जैसे सैलरी अलाउंस है, इंटरेस्ट अलाउंस है आपका, लॉस के सिचुएशंस में क्या कंडीशन होंगी। समटाइम्स पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता, तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रॉफिट लॉस के बारे में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो तो वहां पर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इक्वली प्रॉफिट और इक्वली लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग ऑल द पार्टनर्स। इसके अलावा अगर और भी आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखवाना चाहें तो वो आप लिखवा सकते हैं इन राइटिंग, राइट। Otherwise, the contract is considered as binding even if it is an oral agreement. अगर ये oral agreement भी है तो भी आपका पार्टनरशिप बिजनेस बन गया और आप फॉर्मुलेट हो गया, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं उस बिजनेस को, राइट। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में कंपनी पढ़ी थी तो वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कंपनी क्योंकि एक लीगल एंटिटी है तो उसकी लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप आपके बिजनेसेस तो हैं, एंटिटीज तो हैं, बट दे आर नॉट लीगल एंटिटीज। दैट्स व्हाई इनकी जो पेपर वर्क है वो, इनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत मिनिमल है। देन वी हैव अ लिमिटेड लाइफ, partnership business has a limited life due to certain factors, like if I don't want to carry on my partnership business, let's say Mr. A ने कह दिया मैंने नहीं करना, मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना, so it's the end of a partnership business. So any one of the partners can terminate the partnership business at will at any point of time, right? Otherwise, the other factors that could lead towards the end of the partnership business is the death of a partner,
in case if your business faces bankruptcy or any other event, right? So the life of the partnership business is very limited. There are certain incidents, events that actually minimizes the life of the partnership business. The next and important characteristics is taxation. In contrast, you can see that joint stock companies have unlimited life, right? And now you can see the difference lies also in terms of taxation among the partnership business and the joint stock company. The partnership business income itself is actually not subject to tax, right? A partnership in business income itself actually is not subject to tax. First of all, you have to distribute the partnership profit or loss among the partners, right? According to the agreed ratio. Once the partnership profit is being distributed among the partners, now it's become individual income, right? Then that particular individual income is taxable और उसकी बेसिस पर फिर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं. करना क्या आप लोगों ने? First of all, you have to distribute the income or loss of the partnership business among the partners according to the stated agreed ratio, right? उसके बाद जब आपका पार्टनर को पता चल गया कि इस पार्टनर के पास अब ये टोटल इनकम है, तो उसके ऊपर फिर इंडिविजुअल टैक्स लगता है, उसकी टैक्सेबल इनकम डिटरमिन हो जाती है और उसके बाद उसके ऊपर टैक्स आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक हो गया? बट रिमेंबर वन थिंग कि अगर इसका कंट्रास्ट आप डेवलप करें जॉइंट स्टॉक कंपनी से, तो इन जॉइंट स्टॉक कंपनी यू हैव सीन दैट the company's income itself is being subject to tax, and then once it is being distributed among the shareholders, then it is again being taxed, right? So double taxation हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था joint stock company में concept. Now over here the taxation is just once, and that is individual tax, right? So the tax rates are much minimal in comparison with the corporate taxes. इनकी रेशो या इनकी परसेंटेज जो लेवल की जाती है वो भी कम होती है. कॉर्पोरेट इनकम बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर कॉर्पोरेट इनकम के ऊपर टैक्सेशन का रेट्स भी ज़्यादा होते हैं. और एक चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज नो मैटर यू विल डिस्ट्रीब्यूट कैश और नॉट, प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें ये एक अलग कहानी है, लेकिन इट मीन्स कि जो आपके पास कैश है, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट अर्न किया आपके बिजनेस ने इस वक्त 50,000, ठीक है, तो वो आप 50,000 आप लोगों ने उसकी उसकी बाइफरकेशन आप लोगों ने कर लेनी है, उसकी एलोकेशन आपने कर देनी है कि इस 50,000 में मिस्टर ए का हिस्सा कितना है, मिस्टर बी का हिस्सा कितना है, मिस्टर सी का हिस्सा कितना है. कैश डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसकी एलोकेशन हर साल के एंड पर कर दी जाती है. जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है, लेट से आपने अकाउंटिंग पीरियड अपना 1 साल सेट किया हुआ है कि हर 1 साल के बाद या हर 6 महीनों के बाद हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे. So whatever the accounting period is, you have decided after the end of each accounting period, the partnership income or loss is actually being allocated among the partners. But it's not necessary to distribute the cash, क्योंकि हो सकता है कि बिजनेस अपने कैश फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए अपने पास रखना चाहे या फ्यूचर ग्रोथ के लिए, बट विद द विल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. अगर तमाम पार्टनर्स उसको फ्यूचर पर्पसेस के लिए बिजनेस में री इन्वेस्ट करना चाहें या ग्रोथ पर्पस के लिए उसको या किसी कंटीजेंसी को फ्यूचर को में अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करने के लिए रखना चाहें, तो वो रख सकते हैं, राइट? वो अकुमुलेट हो सकता है पार्टनरशिप बिजनेस में. Then we have a very important concept that is mutual agency. That is actually different, a very different point from the joint stock company in comparison. What is mutual agency? Mutual agency is a concept that all the partners are the agents of the business. All the partners are the agents of the business, and that's why they have the right to. Okay, what I have done, allow me to. Okay. Mutual agency is, I was telling you that that all the agents have the right to make to do work in the boundaries or in the scope of the business. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, 3 लोगों का पार्टनरशिप बिजनेस है. अब वो तीनों जो स्कोप ऑफ द पार्टनर, जिसे मैं कहती हूँ स्कोप ऑफ द बिजनेस, इट मींस कि जो बिजनेस से रिलेटेड अफेयर्स हैं उसकी डिसीजन मेकिंग वो सब लोग मिलके कर सकते हैं, और उनकी जगह पे उनके बिहाफ पर बाकी सबके बिहाफ पर कोई एक बंदा भी कर सकता है.
राइट, जिसके पास जनरल पार्टनरशिप के में राइट्स होते हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर अगर मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए चाह रहे हैं कि हम एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फॉर द परचेज ऑफ और द प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, he can do that, he is entitled to do that, he has a right to do that। अगर मैं किसी एम्प्लॉय को हायर करना चाह रही हूँ तो आई कैन हायर एन एम्प्लॉय, लेकिन विद इन द स्कोप ऑफ द बिजनेस, वो तमाम चीजें जो बिजनेस के स्कोप में अलाउड है, बिजनेस की बाउंड्रीज में अलाउड है और बिजनेस के लिए एक्चुअली इन टर्म आप सबको लगता है कि सबके लिए बेनिफिशियल है, यू कैन ऑल टेक ऑल द डिसीजंस। लेकिन बिजनेस की बाउंड्रीज से बाहर निकलकर आप कोई पार्टनरशिप के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और एक्चुअली ये एक चीज होती है जिसकी वजह से फ्यूचर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस भी होते हैं। ये जो राइट आपके पास है ना म्यूचुअल एजेंट होने का, कि एनीवन कैन वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, इसमें एक्चुअली ये होता है कि म्यूचुअल एजेंसी एक्चुअली एक्सपोजेस द रिस्क ऑफ अनवाइज डिसीजंस ऑफ that are being taken by the any other partner। For example, अगर मिस्टर ए को लगता है कि मिस्टर बी ने खासा अनवाइज डिसीजन लिया है, it means is not a rational decision, or he thinks that the employee he hired is not good, he's not calibered, or the company which he have given the contract of procurement of raw material is not वर्दी एनफ, या उसकी सब स्टैंडर्ड क्वालिटीज होती हैं, या उसमें कोई कंप्लेंट्स हैं, या कुछ ऐसा आपको किसी भी तरह से लगे कि अनवाइज डिसीजन नहीं है, रैशनल डिसीजन नहीं है, तो यही एक एक्चुअली रीजन होती है जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस ब्रेक हो सकता है, या उसमें डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं, या उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। कि ये जो रिस्क होता है ना, बाकी पार्टनर्स को बाकी दूसरे पार्टनर्स के जो डिसीजन मेकिंग का रिस्क बेयर करना पड़ता है एक्चुअली, right, and which ultimately leads towards their financial position। That's why it is very important। नाउ इन दिस इसको रिड्यूस करने के लिए ये भी हो सकता है कि आप जिन एजेंट्स की जिन साइट्स पर एक्सपर्टीज हों, उन एजेंट्स को उसी चीज के लिए ड्यूटी असाइन की जाए। फॉर एग्जांपल, एक बंदा फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी में से एक बंदा जो है वो फाइनेंस और अकाउंट्स की उसकी ग्रिप अच्छी है, या उसने पहले किसी कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर के तौर पे काम किया हुआ है, तो फिर आप उसे अपने बिजनेस की फाइनेंशियल डिसीजंस दे सकते हैं कि भाई उसकी एक्सपर्टीज है इस चीज में, राइट। किसी ने ह्यूमन रिसोर्स को पहले डील किया हुआ है तो आप उसको एचआर मैनेजर बना सकते हैं अपने पार्टनरशिप बिजनेस का। तो इस तरह के भी आपने डीलिंग करनी है अपनी एम्प्लॉयज से भी, बाहर के जो आपके होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं आपके, इन लोगों से आपने डीलिंग करनी है जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छी आती है। तो इट्स जस्ट लाइक इसको मिनिमाइज करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ड्यूटीज पर्टिकुलरली असाइन कर दें कि यही बंदा सिर्फ इस स्कोप के अंदर काम कर सकता है। या अगर फॉर एग्जांपल इस तरह भी हो सकता है कि अगर बाइंग अप टू 1 लाख तक है तो ठीक है, एनीवन कैन टेक द डिसीजन। लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर की परचेजिंग का काम करना है तो फिर हम सब लोगों की कॉन्सेंट उसमें शामिल होगी। तो इस तरह से भी आप इसी तरह से कुछ लिमिट्स लगाकर इस म्यूचुअल एजेंसी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दिस इज द केस, अगर आपने देखा हो तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इफ यू रिमेंबर, all the shareholders have limited liability in the joint stock company, they enjoy actually limited liability, right? But over here in the partnership business the liability is unlimited. It simply means that all the partners have unlimited liability in a general partnership business, right? In a general partnership business all the partners have unlimited liability. This unlimited liability means that they are liable to pay off the debts of the partnership business, right? To pay the debts of the partnership business. And in case if partnership cannot pay off its debts on its own, आपका बिजनेस ऐसा है कि वो अपने डेट्स को क्लियर नहीं कर पा रहा, क्रेडिटर्स के क्लेम्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो फिर क्रेडिटर्स क्या करते हैं, दे कैन apply their claim on the personal income of the personal financial position of the partner। पहली तो बात यह है कि आप के जो डेट्स हैं वो आपके बिजनेस का डेट है तो बिजनेस को ही बेयर करना चाहिए। लेकिन इन केस इफ ऐसा हो जाता है कि बिजनेस उन डेट्स को, लाइबिलिटीज को, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो क्रेडिटर क्या करेगा, क्रेडिटर फिर आपके जो एजेंट्स हैं, आपके जो ऑनर्स हैं, पार्टनरशिप के जो ऑनर्स हैं, उनसे क्लेम करेगा। और लॉ भी यही कहता है कि अगर कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कि अगर बिजनेस को नुकसान हो गया
और नुकसान पूरा तो करना ही करना है। अब तो नुकसान कैसे पूरा होगा कि आपके पार्टनर्स अपनी पर्सनल जो उन्होंने उनके पास पैसा है उससे उस पे ऑफ करेंगे उस डेट को। एक एग्जांपल सपोज करते हैं कि आप सपोज करते हैं कि आपने एक शॉप रेंट पे ली, दो लोगों ने कारोबार स्टार्ट किया और आप लोगों ने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट आपकी 40,000 थी, 60,000 आप लोगों ने लोन लिया और उसमें आपने अपने जो भी गुड्स जिसका भी बिजनेस था वो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया। लेट्स से फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे सपोज करती हूँ कि एक इंसिडेंट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ एंड एवरीथिंग कम्स टू एन एंड द नेक्स्ट डे। 40,000 आपका था, 60,000 आपने लोन पे उठाया हुआ था, सब खत्म हो चुका। राइट, शॉप तो रेंट की थी, उसको भी रेनोवेशन करवा के आपने रिटर्न करनी है। तो अब यहाँ पे क्या है, वो जो 60,000 का डेट है वो एक्चुअली बिजनेस ने ऑफ पे ऑफ करना था, लेकिन अब बिजनेस तो एक्चुअली खत्म हो गया ना। तो बिजनेस खत्म हो गया, 40,000 जो ऑनर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ था वो तो गया। अब जो 60,000 का डेट है वो भी ऑनर्स के ऊपर आ जाएगा, और जो शॉप का जो रेनोवेशन है वो भी उसके ऊपर आएगी, उन ऑनर्स के ऊपर। इट मीन्स अब उन्होंने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी वो तो गई, राइट, लेकिन अब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेक पर आ जाएगी। अब लेट्स से मिस्टर एंड मिस्टर बी दो पर्सन हैं, उनमें से एक सॉल्वेंट और एक इंसॉल्वेंट हो जाते हैं किसी भी टाइम पे डेट को पे ऑफ करते करते। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, द रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर इज लायबल टू पे ऑफ द डेट अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो लॉ ये कहता है कि क्रेडिटर अदालत में भी जा सकता है अगेंस्ट द पार्टनर दैट इज सॉल्वेंट टू पे ऑफ इट्स डेट्स, टू क्लियर ऑफ इट्स क्लेम्स, right? This is unlimited liability, that the personal property of the owner is at its stake. Otherwise, in partnership, in a joint stock company, you can see that the liability was limited up to the amount of the investment in the business. Company के अंदर बस ये होता है कि आपने जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है बस वही लॉस में जा सकती है, उससे ज्यादा आपका लॉस नहीं होता। तो उसकी एक लिमिट्स होती हैं। In partnership business, there is no loss, no limit of the loss, right? In contrast of the general partnership business, where all the partners have unlimited liability, people actually prefer limited partnership business. अब limited partnership business क्या होता है कि at the time of establishment of the partnership business, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवा लें कि ये पार्टनर्स लिमिटेड हैं और ये पार्टनर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखते हैं, वो उसमें केस में ऐसा होता है कि द पार्टनर्स हु आर एक्टिव who actually involved in the decision making of buying and selling, their liability is being considered as unlimited and they are being considered as the general partner of the partnership business. While the other partners who have actually invested their funds in the business and their role in the decision making is very much passive, they can place themselves as passive partners with limited liability, and this type of partnership business is called limited partnership business, right? Now, the last thing, that is co-ownership of the property. Co-ownership of the property means sometimes it's not necessary that all the partners will bring cash in the business. अगर Mr. A, B और C तीन लोगों ने partnership business start किया, जरूरी नहीं है कि तीनों partners cash ही invest करेंगे business में। हो सकता है कि एक partner, जैसे भी मैंने एक दुकान खोली थी, तो उस शॉप में एक बंदा शॉप इन्वेस्ट कर रहा है, एक बंदे ने अपना पैसे इन्वेस्ट करके गुड्स परचेज करके रख दी हैं। तो द थिंग इज दिस, दैट एनी प्रॉपर्टी, एनी एसेट दैट इज बीइंग in the on the name of the partnership business is actually being jointly owned by all partners. अब वो जो शॉप आपने बिजनेस को दी कि ये मेरी मेरी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ये आप शॉप ले लें मुझसे, राइट, मैं कैश नहीं है मेरे पास, शॉप है, मैं शॉप दे देता हूँ, ठीक है, आपने एसेट दे दिया, लेकिन अब दैट पर्टिकुलर एसेट is actually being jointly owned by all the partners, right? This is co-ownership of the partnership property, right? So the partners have a claim on partnership assets based on their capital accounts and the partnership contract. All the properties are actually jointly owned by all the agents and the partners of the business. Okay, now we have to discuss a case that is okay, basic accounting, partnership accounting. Now you can see what are the differences. Let's first of all shed light on them. Uses a capital account for each partner. बेटा पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबका
सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने देखा होगा कि एक ही ऑनर था, उसी का कैपिटल अकाउंट था, सारा प्रॉफिट उसी में, सारा लॉस उसी में, ड्राइंग्स हो रही हैं उसी में से माइनस हो रही हैं। लेकिन अब यहाँ पार्टनरशिप में क्या है कि अगर 3 पार्टनर्स हैं तो आपने तीनों के अलग कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों का अलग कैपिटल अकाउंट होगा। कैपिटल ऑफ मिस्टर ए, कैपिटल ऑफ मिस्टर बी, कैपिटल ऑफ मिस्टर सी, क्योंकि तीनों ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है एक पार्टनर विड्रॉल्स करवाए, बाकी 2 पार्टनर्स विड्रॉल्स ना करवाएं। वो ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो डिफरेंट हो, 5:3:2। तो 5 वाले का प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा है, उसको प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा जा रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट्स को आपको अपडेट करना पड़ता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। यू विल यूज सेपरेट विड्रॉल अकाउंट्स। जो बंदा विड्रॉल्स करेगा उसके पर्टिकुलर नाम के साथ ड्राइंग्स अकाउंट्स को हम राइट डाउन करेंगे। And then you have to allocate the net income or loss to partners according to their partnership agreement, right? Whatever is being stated in the partnership agreement, we will distribute the income accordingly. First of all, let's see how to organize a partnership business. अगर आपका partnership business organize हो रहा है, बनने जा रहा है, formulate हो रहा है, तो उस वक्त क्या situation होगी? अच्छा, इसमें remaining entries business की discuss नहीं गई हुई इस chapter में, because all the remaining entries are just like same. सिर्फ drawings और जो कैपिटल जब आपका इन्वेस्ट हो रहा होता है, सिर्फ ये 2 एंट्रीज डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपने कैपिटल बाय नेम लिखना है, बाय नेम ऑफ द पार्टनर, और विड्रॉल्स भी जब होनी है तो ड्राइंग्स की एंट्री भी बाय नेम ऑफ द पार्टनर होनी है। इसलिए ये 2 एंट्रीज ही ज्यादातर बुक्स में मेंशन होती हैं। रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर जस्ट लाइक सेम एज यू हैव स्टडीड इन द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सो देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। नाउ लेट्स सी, दिस इज एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट। Kyla Zain, this is the very first partner, and Hector Perez organized a partnership on 11th of January. The name of the business was Boards, and what type of business it is? Actually, this business offers year-round facilities of skateboarding and snowboarding. Right now, this is important information. Zain's initial net investment in boards is 30,000. उसने अपने business में कितना पैसा invest किया? 30,000. That is made up of 30,000 में कैसे कैसे contribution है? Cash उसने दिया 7,000. तो हम लिखेंगे Zain's की investment 11 जनवरी को एंट्री पास कर रहे हैं, जनरल एंट्री। कैश कितना दिया उसने? 7,000. Increase in assets will be recorded as debit. Then you have boarding facilities. He invested actually boarding facilities of 33,000. It means assets. So boarding facilities, again, another fixed asset, increase in assets will be recorded as debit. Then a note payable. Note payable is a liability reflecting a bank loan. उसने बैंक से कर्जा लिया हुआ था business के लिए for his new business amounting to 10,000. So we have recorded note payable. Increase in liability will be recorded as credit, and Zain's capital 30,000. Now if you see, the debit and the credit side are both equal by 40,000. So Zain's capital is 30,000. He has actually invested 30,000 in the business, लेकिन उसमें 7,000 कैश है, 33,000 की बोर्डिंग फैसिलिटीज हैं, और 10,000 का उसने बैंक से कर्जा लिया हुआ था, जो भी उसने बिजनेस के नाम पे, मतलब बिजनेस में ऐड ऑन करवा दिया कि अब वो बिजनेस उसको पे ऑफ कर देगा। In contrast, the second partner, he actually invested cash of 10,000 in the business. उसने सिर्फ कैश इन्वेस्ट किया है, तो हमने उसकी 11th जनवरी को एंट्री कैसे की है? कैश टू कैपिटल, right? Cash debit 10,000, capital credit 10,000. Over here, you can see that we have write down the names of the owners as well. That Zain's capital is amounted to 30,000. His initial investment in the business is 30,000. While over here, the second partner, Mr. Hector Paris, has a capital of 10,000. Now, if someone says you to prepare the balance sheet of this business, so you can prepare the balance sheet at any point of time in the accounting year. Now, the accounting equation or the balance sheet would be like this. Cash 7,000 plus this 10,000.
total amounting to 17,000, and the boarding facilities 30,000, 33,000. अगर आप इन सबको ऐड ऑन करें तो इट्स अमाउंटेड टू 50,000. और लाइबिलिटी साइड पे क्या होगा, लाइबिलिटीज होंगी आपके पास 10,000 की, और ऑनर सिक्योरिटी में आपके पास जायंस कैपिटल होगा और पेरिस कैपिटल होगा 10,000 का, अमाउंटिंग टू 50,000. तो आपकी बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त होगी 50,000 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 50,000 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट, right? So that's how you will record the formation of partnership business. Okay. Next is how we can allocate the profit. How can we allocate and divide the profit and loss of a partnership business among its partners? First of all, you have to learn two concepts over here. One is salary allowance. Actually बेटा आपने इससे पहले सैलरी एक्सपेंस की टर्म पढ़ी होगी. सैलरी एक्सपेंस की टर्म आपने पढ़ी होगी. सैलरी एक्सपेंस ये होता है that we hired an employee who is not an owner, he's just an employee. Employee is offering his services to us, he's rendering services, and after the end of a month we are paying him the salary. That salary business actually recorded as an expense because we have taken benefits from that particular employee for the whole 1 month. That's why we record the salary amount given to him as an expense. But in partnership business, you know that if the partners are working and they are offering their services, they are rendering their services, they are giving time to the business for decision making purposes, then it is understood that it is just for the sake of profit, not for the salary purposes. That's why it is always being written as salary allowance. It means कि अगर मिस्टर ए, बी और सी में से एक मिस्टर बी कह देते हैं कि मैं इस बिजनेस में जो भी मैं अपना बिजनेस जॉब कर रहा हूँ मैं क्विट कर देता हूँ, मैं अपने बिजनेस में पूरा टाइम दूंगा, इसमें डिसीजन मेकिंग में काम करूंगा, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे सैलरी अलाउंस मिले, तो अगर बाकी पार्टनर्स एग्री करते हैं तो उनको सैलरी अलाउंस मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइम इन्वेस्टेड बाय दैट पर्टिकुलर पार्टनर इन द बिजनेस. Similarly, the second thing is interest allowance. Interest allowance is something कि अगर इस तरह हो कि तमाम पार्टनर्स की कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट हो. फॉर एग्जांपल जैसे अभी इस बिजनेस में जायंस की इन्वेस्टमेंट 30,000 थी जबकि पेरिस की इन्वेस्टमेंट 10,000 थी, तो अब अमाउंट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, सो दे कैन डिमांड एन इंटरेस्ट अलाउंस कि अगर हम इसी पैसे को अगर देखें ना दोनों लोग अपना पैसा बैंक में जमा करवा देते हैं, दोनों का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होता है, जायन को डेफिनेटली ज्यादा इंटरेस्ट मिलता, तो he can demand an interest allowance. But it always leveled on the beginning balance of the capital amounts invested in that particular business by the partners, right? Again, it is different from interest expense. Okay, it is different from interest expense, and never ever try to mention the salary allowance and interest allowance in the income statement. These are not the income statement accounts. जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं. ये जो आपका सैलरी अलाउंस है और इंटरेस्ट अलाउंस है, ये आपका सिर्फ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनरशिप की बिजनेस की होती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेप्स हैं जो यूज होते हैं. एंड द लास्ट थिंग इज द डिवीजन method of dividing the income or loss. Now if you see, if there is no contract written or no agreement signed among the partners, then partners share their income and their loss equally, right? In case if partners agree on how to share income, प्रॉफिट का उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कैसे करना है, लेकिन लॉस का लिखना भूल गए हैं, अपने पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लॉस लिखवाना ही भूल गए हैं, तो अगर प्रॉफिट लिखा हुआ है तो हम अंडरस्टूड करेंगे कि लॉस भी इसी रेशो के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? इट्स एन अंडरस्टूड थिंग दैट द लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द सेम वे, राइट? एंड देन वी हैव द रिमेनिंग इनकम. इन केस इफ अगर फिर भी इनकम बच रही है आफ्टर गिविंग सैलरी एंड इंटरेस्ट अलाउंस, देन the income would be distributed as stated ratio, like 3:2:1, 5:3:2, 1/5, 3/5, इस तरह कुछ भी. Salary allowance, interest allowance, and the remaining is being distributed according to the
fixed ratio, right? And another method we have that we can distribute the income according to their capital balance or capital amount invested in the business, right? अब ये जो तीनों आपके पास मेथडोलॉजीज हैं जिनके जरिए आप देख रहे हैं कि डिवीजन हो रही है प्रॉफिट में इनकम और लॉस की, वो इन तीनों को एक दफा उसकी एंट्रीज देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एलोकेशन ऑन स्टेटेड रेशियोज, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने रेशियो मेंशन की हुई है, राइट? दिस स्टेटेड रेशियो also called the income and loss sharing ratio, income and loss sharing ratio, profit loss ratio, P&L ratio. ठीक है? Now let's see the example. To illustrate this, let's see what it is. Over here you can see the Zain and Mr. Zain receive will 2/3 and Mr. Paris will receive 1/3. It means it's already been decided that whatever the profit of the business would be, Mr. Zain would receive 2/3 and Mr. Paris will receive 1/3. Okay, this is the ratio that is already been agreed among the partners. Now, अगर कंपनी का प्रॉफिट या आपके सॉरी कंपनी कह दिया पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट 60,000 है, तो आप उसकी क्लोजिंग एंट्री देखिएगा, इनकम समरी, प्रॉफिट कितना है आपका 60,000, इसका आपने 2/3 चार्ज किया. इट मीन्स 2/3 मीन्स 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3. 60,000 multiplied by 2 divided by 3 will give you the 40,000 of Mr. Zain's capital. Mr. Paris को मिलना था 1/3, तो 60,000 multiplied by 1 divided by 3, you will get 20,000. So it means out of 60,000, Mr. 40,000 would be given to Zain and 20,000 should be given to Mr. Paris. This is how we allocate income and we close the income summary account. That is actually a closing entry. They have given you a closing entry, right? To close the income summary account. The next way, कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हम अपने कैपिटल एंड बैलेंस के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, सॉरी कैपिटल बैलेंस के हिसाब से प्रॉफिट को एलोकेट करेंगे या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कैपिटल बैलेंस क्या है? If Zain and Paris agrees to share income and loss on the ratio of their beginning capital, right? तो बिगनिंग कैपिटल देख लें, जाइन का कितना था 30,000, मिस्टर पैरिस का कितना था 10,000. अब प्रॉफिट हुआ है हमारे पास 60,000 का, तो मिस्टर पैरिस की रेशियो टोटल इन्वेस्टमेंट बन गई 40,000 की, मिस्टर जाइन की क्या बनती है 3/4 रिसीव करेंगे. वो 3/4 क्यों रिसीव करेंगे? इनका रेशियो डेवलप कर लिया हम लोगों ने 30,000 हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, और टोटल जो हमारा बिजनेस का वॉल्यूम था वो था 40,000. 30 + 40 मिस्टर पैरिस का टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड थी 40,000, तो इनकी रेशियो बन गई 3/4 और मिस्टर पैरिस की रेशियो बन गई 1/4, क्योंकि उनके बिजनेस में हिस्सा था 10,000 का और टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल द पार्टनर्स थी 40,000, तो उनका 1/4 रेशियो बन गई. तो 60,000 का 3/4 मिस्टर जाइन को एलोकेट हुआ हो गया और हमेशा ऐसे ही एलोकेट होगा, और जो है 60,000 का 1/4 मिस्टर पैरिस को इस अकाउंटिंग पीरियड में एलोकेट हो जाएगा. ठीक हो गया. The last method is when we have allocation on services, capital, stated ratios. It means कि इन केसेस में आपके पास सैलरी अलाउंस भी होगा, इंटरेस्ट अलाउंस भी होगा, और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसको अपने प्रो रेटा या स्टेटेड रेशियोज के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट भी करना है. तो इसमें हमारे पास दो सिनेरियोज होते हैं, दो सिचुएशंस होती हैं. एक सिचुएशन ये है कि हमारी इनकम एक्सीड कर जाए हमारे अलाउंस से. अलाउंसेस अगर सपोज करें आपके पास 40,000 के हैं, आपकी इनकम 60,000 है, लाख है, 2 लाख है, 3 लाख आपने प्रॉफिट अर्न किया है, तो उस केस में जब आपकी इनकम एक्सीड कर रही है आपके अलाउंस से, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? और अगर वाइस वर्सा हो जाए, इट मीन्स कि अलाउंसेस एक्सीड कर जाए इनकम से, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो इसको हम पर्टिकुलरली इसकी इलस्ट्रेशंस को स्टडी कर लेते हैं. इसमें यहाँ पे आप कुछ देख लें कि ये जो डिसीजन हुआ है वो क्या है. इसकी एग्जांपल देखिएगा. एनुअल सैलरी अलाउंस ऑलरेडी तय हुआ है. मिस्टर जाइन का है 36,000, मिस्टर पैरिस का है 24,000. एंड व्हाट अबाउट द एनुअल इंटरेस्ट अलाउंस? इट्स ऑलरेडी बीन डिसाइडेड दैट एनुअल इंटरेस्ट अलाउंस इज 10% of the partner's beginning year capital.
किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में जो उनका स्टार्टिंग बिगनिंग कैपिटल होगा उसका 10% दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउंस मिलेगा, और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वल शेयर ऑफ एनी रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इनकम और लॉस, whatever profit or loss left after giving salary and interest allowance will be shared equally among the partners. Right here we have two partners, so equally between the two partners. Now let's see the illustration first, और इसी के जरिए हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसको जी. For this you have to write down, you have to develop columns on the name of the partners, Mr. Zain and Mr. Paris, and you have to develop another column that is of amount total. Over here, the net income, first of all, write down the net income. In this accounting period, the net income amounted to $70,000, right? So we have supposed that the income is $70,000. First of all, you have to deduct the salary allowance. You have to charge, or you have to distribute the salary allowance among the partners. As already I mentioned, discussed in this exercise, that Zain has a salary allowance of 36,000. So 36,000 in the column of Mr. Zain, and Mr. Patterson has a salary allowance of 24,000, right? So we have allocated out of 70,000, 36,000 to Mr. Zain and Mr. 24,000 to Mr. Paris, the salary allowance. In next, we have the interest allowance. Interest allowance, as I already mentioned, it is being given on the beginning capital. So if you remember, the beginning capital invested by the owner, Mr. Zain, it was 30,000, and the beginning capital invested by Mr. Paris was 10,000. Now we have, it was agreed that the interest allowance would be 10%. So हमने उनका beginning capital के ऊपर 10% level किया, तो हमें पता चला कि Zain के पास interest allowance आ रहा है 3,000 और Mr. Paris को interest allowance मिल रहा है 1,000. Combinedly, if you see, interest allowance of 3,000 to Mr. Zain and 1,000 to Mr. Paris. Combinedly, if you see, तो मैंने 70,000 जो हमारी नेट इनकम थी उसमें से सैलरी अलाउंस दिया, और उसके बाद इंटरेस्ट अलाउंस 3,000 मिस्टर जाइन को दिया, 1,000 मिस्टर पैरिस को दे दिया. अब देखें टोटल कितना चला गया. 39,000 इज बीइंग गिवन टू मिस्टर जाइन, 25,000 इज बीइंग एलोकेटेड टू मिस्टर पैरिस. टोटल कितना हो गया, 39 प्लस 25, 64,000. तो आउट ऑफ 70,000 में से 64,000 मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैलरी अलाउंस की मद में और इंटरेस्ट अलाउंस की मद में. इट मीन 60,000 चला गया सैलरी अलाउंस में, 4,000 मेरा चला गया इंटरेस्ट अलाउंस में, बाकी कितना बचा 6,000. अब ये जो बैलेंस बचा है, बैलेंस ऑफ इनकम 6,000, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इक्वल रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो बैलेंस इज बीइंग, रिमेनिंग बैलेंस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड और एलोकेटेड इक्वली. 3,000 टू मिस्टर जाइन, 3,000 टू मिस्टर पैरिस. तो टोटल आपने सारी इनकम जो इस साल की थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी. सो यू विल राइट 0 ओवर हियर कि सारी जो थी वो सारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई. अब हम इस कॉलम को ऐड ऑन कर लें. तो इस कॉलम को ऐड ऑन करने से आपको पता चलेगा कि मिस्टर पैरिस को आपने एलोकेट किया 28,000, 3,000 एग्रीड रेशो, 1,000 उनका इंटरेस्ट अलाउंस है, 24,000 उनका सैलरी अलाउंस है. तो टोटल 28,000 हमने एलोकेट कर दिया मिस्टर पैरिस को और 42,000 टू मिस्टर जाइन. और एक्चुअली आप इन दोनों को ऐड ऑन कर लें तो यू विल गेट इट इज 70,000. 42,000 प्लस 28,000, तो 70,000 में से 42 चला गया मिस्टर जाइन को और 28 चला गया मिस्टर पैरिस को. इस केस में अगर आप देखें तो ये आपने जब आपने उनका बैलेंस बनाना है, उनकी स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है, तो उसमें इनका 42 और 28 का बैलेंस जाएगा. ठीक हो गया. यहाँ पे होता है ना बिगनिंग कैपिटल बैलेंस प्लस नेट इनकम, तो वो नेट इनकम यहाँ पर 42 जाएगी मिस्टर जाइन में ऐड होगी और 28 मिस्टर पैरिस के अकाउंट में ऐड होगी. As I already mentioned, it is being allocated, it is not being distributed. आपने allocate कर दिया है कि 70,000 में से 42 इसका 28 इसका है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके अगेंस्ट आप कैश भी रिलीज करें. अब ये वो केस था जिसमें आपने देखा था कि इनकम एक्सीड कर रही थी अलाउंसेस से. आपने देखा ना टोटल अलाउंसेस 64,000 के बन रहे हैं. ठीक है, टोटल अलाउंसेस 60,000 सैलरी का है और 4,000 आपका इंटरेस्ट अलाउंस है. तो टोटल अलाउंसेस 64 थे और आपकी इनकम जो थी वो 70,000 थी. इट मींस कि आपकी इनकम आपके अलाउंसेस से ज्यादा थी. सो दिस वाज द केस व्हेन इनकम एक्सीड्स द अलाउंस.
इन केस इफ अगर आपका अलाउंस एक्सीड कर जाए आपकी इनकम से तो क्या होगा वो देखिएगा। अब यहाँ पर हमने सपोज किया कि हमारी टोटल नेट इनकम कितनी है, जस्ट 50,000, जबकि अभी आपने देखा था कि हमारे अलाउंसेस 64,000 की हैं, जिसमें ऑलरेडी मेंशन था हमारे एग्जांपल में कि 36,000 मिस्टर जाइन की सैलरी है, 24,000 ऑलरेडी एग्रीड सैलरी है मिस्टर पैरिस की, तो ये 60,000 तो यहाँ निकल गया सैलरी में, सैलरी अलाउंस। इंटरेस्ट अलाउंस में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि बिगिनिंग बैलेंस जो होता है आपके ऑनर्स का, उसके ऊपर एग्रीड रेशो, ये एग्रीड रेशो किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिफरेंट हो सकती है, 10% ले लें, 9% ले लें, 5% ले लें। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इट वाज मेंशन दैट वाज 10%, तो हमने इसका जब 10% कंट्रीब्यूट किया, दैट वाज 4,000 वी हैव टू डिस्पर्स और एलोकेट in terms of interest allowance to Mr. Zain and Mr. Paris. So almost 64,000 निकल गया। तो 50 में से out of 50, that was the net income of that particular accounting period, we have allocated 64. The remaining amount would be in negative balance. So because in this case the allowances were exceeding the net income, so the remaining 14,000, this is not actually lost. You cannot write it lost. You can see the negative figure, but this is not lost because you can see that in this accounting period you have actually earned profit, the net income of 50,000 rupees. So this is not a loss. This is actually in distribution of profit and loss. This negative balance actually represents that allowances are actually exceeding your income. So again you will distribute the rest of the amount equally among the partners. So 7,000 will be charged to Mr. Zain and 7,000 will be charged to Mr. Paras. Now if you see, if you will take the column total of Mr. Paras, you have to take the column total. So 24 plus 1, 25,000 out of 50,000, 25,000 is being given to him as salary and interest allowance, and you have to deduct the 7,000, it will get 18,000. तो 50,000 में से 18,000 हमने allocate किया मिस्टर पैरिस को, और इस 50,000 में से 32,000 हमने allocate किया मिस्टर जाइन को। हाउ? 36 plus 3 टोटल हो गया 39, माइनस करें 7,000, you will get 32,000. So this is how we allocate profit among the partners. In case if it is loss, अगर loss होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको loss given होगा, right? तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेट लॉस, और लॉस भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा कि पहले आपने सैलरी अलाउंस देना है, फिर आपने इंटरेस्ट अलाउंस देना है, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट नेगेटिव एक्चुअली लॉस की होगी वो भी लॉस आपने एग्रीड रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फिर आपने बताना है कि टोटल जो पार्टनर्स हैं उनका इस वक्त इनकम या इस वक्त उनका जो लॉस है वो एक एक बंदे को कितना एलोकेट होगा। So inshallah in the next lectures we will see cases of dissolution of partnership business. That's all about today. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.